Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and I'm so glad that you decided to learn something new today. So for today's video, we are going to be doing inserting in a linked list. This is actually part 2 of my video that I had put last week, which was inserting at the end of a linked list. And today we are going to do inserting at the front. So as I already said in my last video, this will require a concept of pointers, which I'm going to be telling you first, and then we will move to inserting in a linked list. Also, I am trying a different method today. I usually write it in pen, but today, as someone suggested, I am gonna actually code the entire thing for you and I will run it for you. So let me know in the comment section below which method you like more and what do you want me to do for my next videos. Okay, so let's get started with the today's video. Okay, so let's get started. So what I've done here is I've taken a very simple program. I've taken an integer variable var and assigned the value of 10 to it. Then I've taken a pointer variable and assigned the value address of the var to it. Okay, now here I'm just printing it, and here I'm calling func with my ptr as parameter. Now here what it does is it just changes my ptr to point to global. Okay, the address of global is now stored in ptr. Now what do you think will be the output of this program? You can just pause the video here for 1 second and think that what will be the output. Okay, so it's 10 and 10. Now if you said that right, then I think you understand the concept, and you can just skip to the part where I explain the linked list part of it. But if you said this 10 and 56, then you need to understand what's happening here. So what it is doing is यहाँ पे जब हम PTR पास कर रहे हैं, so like normally ये प्रोग्राम देख के लगेगा कि we are passing by address. So हमारा जो भी changes हम कर रहे हैं फंक्शन में वो हमारा मेन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट? बट what is getting passed by address? The variable var, this var is getting passed by address. हम लोग ये var का address पास कर रहे हैं, तो हमारे ptr में तो var का address ही stored है, राइट? तो जब ये यहाँ पे जा रहा है और ptr को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये ptr तो is local to this function, राइट? अगर यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिखा होता, लाइक अगर हमने यहाँ पे लिखा होता वैल्यू ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू 20 से, अगर हमने ये किया होता तो फिर ये हमारा वैर का वैल्यू चेंज हो गया होता, राइट? बट हम ये लिख रहे हैं, इसका मतलब हम खाली इस पीटीआर को चेंज कर रहे हैं एंड वी आर नॉट टचिंग दिस पीटीआर. ओके, सो अगर हमको अगर चेंज करना ही है एक पॉइंटर का वैल्यू, लाइक आई वांट माय पॉइंटर टू पॉइंट टू सम अदर एड्रेस, आई हैव टू चेंज द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस पॉइंटर. दैट मीन्स मेरे को इस पॉइंटर को बाय एड्रेस पास करना पड़ेगा, मतलब मेरे को इस पॉइंटर का एड्रेस पास करना पड़ेगा. सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल जस्ट पुट एन एम्परसेंट हियर एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ पीटीआर को हम ग्लोबल पे पॉइंट कराएंगे. एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट अ पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल. ओके, लेट्स जस्ट कॉमेंट दिस लाइन बिकॉज दिस विल गिव अस एन एरर. सो अब हमने ये करा है. नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी द आउटपुट? सो नाउ द आउटपुट विल बी 10 and 56. Yes, we got 10 and 56. So now as we are clear with this concept, let's move ahead and insert our node at the beginning of a linked list. So let's get started. So I'm gonna write the code from scratch for you. So as we want to insert in a linked list, so we want nodes, right? So let's just first quickly make a class node where we want data and we want a pointer of type node, which we will call it next. Okay, so now this is my data members, and we will quickly make a constructor to initialize my value so that we don't have to write another function for it. So it's this dot data is equal to data and next is equal to null, because वो हमने पहले ही बताया है कि हमको starting में null को next को कहीं point नहीं कराना है. Okay, so this is what we have done. Now what we want to do next is we want to create a insert function. So पहले हम उसको कुछ भी return नहीं कराना है हमको, तो हम लोग उसको लेते हैं node. सो नाउ एज हमें अभी पॉइंटर कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड हमको हेड को बार बार चेंज करना है, राइट? बिकॉज वी आर इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग, तो हमको हेड को हमेशा चेंज करते रहना है. सो दैट्स वाई वी आर एक्चुअली पासिंग माई हेड बाय एड्रेस. इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर लिया है. इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में जब हमको एंड में इंसर्ट करना था, तब हमने सिर्फ
पॉइंटर टू हेड लिया था, हमने हेड का एड्रेस पास नहीं किया था. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज देयर, अंडरस्टैंड कि हम अलग अलग चीज़ क्यों कर रहे हैं. ठीक है. सो अभी हमने हेड ले लिया है एंड हमारे पास डेटा आ गया है. आईएनटी डेटा में हम वो डेटा पास करेंगे जो हमको डालना है इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए, हमको एक नया नोड तो चाहिए इंसर्ट करने के लिए, एंड वी विल जस्ट कॉल इट न्यू नोड. एंड न्यू नोड बनाने के लिए हमको बस न्यू नोड बनाना है एंड वैल्यू पास करनी है उसमें. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, सिंस हमें स्टार्टिंग में ऐड करना है नोड, तो हमारा जो ये नोड का जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए, वो पॉइंट करना चाहिए जहाँ अभी हेड पॉइंट कर रहा है. राइट. सो हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है वो स्टोर्ड है हमारा वैल्यू ऑफ हेड में. नाउ व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट इज वी वांट टू मेक दिस न्यू नोड एज हेड. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ हेड is equal to new node. ओके. सो दिस इज वेरी सिंपल, इट्स डन. इतना करके हमारा हो जाएगा. सो नाउ देखते हैं अब हमारा मेन में क्या होगा. सो यहाँ जगह बना देते हैं. ओके. सो यहाँ पे हम एक नोड बनाएंगे, हेड बनाएंगे, और उसको हम स्टार्टिंग में नल रखते हैं. ठीक है. एंड अब हम इस इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे. हमको क्या करना है यहाँ पे, वी वांट टू सेंड द एड्रेस ऑफ दिस हेड, और यहाँ पे हमको अपना डेटा भेजना है. आई एम सॉरी, आई जस्ट रोट 20 हियर बिकॉज दैट वाज व्हाट आई वाज गोना इंसर्ट. वी वांट टू पुट डेटा हियर. ओके. सो अभी इसी इंसर्ट फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं 2-3 बार. सॉरी 20, 30, 40, 50 एंड 60. ओके. सो ये हमने इंसर्ट कर लिया. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली राइट अ प्रिंट फंक्शन. नाउ प्रिंट फंक्शन में हमको एड्रेस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ हेड, वी जस्ट वांट टू यूज़ दैट वैल्यू. सो हम वो वहाँ पे हम कुछ भी वैसा नहीं भेजेंगे. वी विल जस्ट सिंपली सेंड द हेड. यहाँ पे वी जस्ट वांट वाइल हेड, जब तक हेड है हमारे पास, while head is not equal to null, which is equivalent to writing this. So we just want to print the value of data of head, and just give a space here, and we will make head is equal to head of next. Cool. So this is very simple. We want to print head here. Let's see if this program runs. Okay, it's giving us some error. Okay, sorry, it's class, not class. And also, I realized we have to make everything public because otherwise we won't be able to access it without an object. Okay, so okay, now let's just run it. Okay, it's still giving us some error. Okay, this data. Now here we have to be very careful. This is a pointer, right? So we have to access it like that, and we cannot access it like dot. Okay, now it should give us the output. So it's 60, 50, 40, 30, 20 because we are inserting in the beginning. Now just to let you know the difference, अगर हमने यहाँ पे मान लो नहीं भेजा होता एड्रेस, अगर हमने एड्रेस नहीं भेजा होता, सिर्फ हेड भेजा होता और यहाँ पे ये भी नहीं किया होता, एंड यहाँ पे फिर हमें ये चेंज करना पड़ेगा, हम हेड नहीं कर रहे, एंड हमने ऐसा किया होता तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आता. ओके, सो इट्स शोइंग मी नो आउटपुट. व्हाई इज दैट? क्योंकि ये हेड हमने नल बनाया था और हम हेड को कभी भी चेंज ही नहीं हो रहा. हमारा हेड, वो हेड हमेशा 20 ही रह रहा है. ऑल दो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ इट इज़ लोकल टू दिस फंक्शन, तो इसीलिए वो हमारा मेन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. हम जब प्रिंट कॉल कर रहे हैं तो वो इस लूप में कभी घुस ही नहीं रहा, तो इट्स गिविंग अस नो आउटपुट. अदर वे व्हाट वी कैन डू इज व्हाट इज अवर मेन एजेंडा, वी वांट कि हमारा हेड जो है वो चेंज हो और वो मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट करे. तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा हेड रिटर्न कराएंगे वहां से. ठीक है, तो हम यहाँ पे हेड लिख लेते हैं. सो दिस इज व्हाट वी विल हैव टू डू एवरी टाइम. हम हेड को हमको रिटर्न करना पड़ेगा एंड उस हेड को हमको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जस्ट इसका रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं फटाक से. इट विल बी नोड. ओके, नाउ लेट्स जस्ट रन इट एंड सी व्हाट इज आवर आउटपुट. It's 60, 50, 40, 30, 20. Okay, so this was about it. अगर तो हम इसको दो वे से कर सकते हैं, या तो हम इसका एड्रेस पास कर सकते हैं तो हमें उनको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा if we want to reflect our changes in the main function, or otherwise we can just return everything in my main function so that वो changes हमारा retain करे main function में. Okay,
I hope you enjoyed this video. Let me know in the comment section below how did you like it, and also let me know कि आपको ये तरीका better लगा या फिर जब मैं लिखती थी पेन से तब आपको better लगता था. So that I can also make videos according to your need. Also अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा and you think it is helpful, then अपने friends के संग भी share करें. And guys, these problems, these are very very basic. हम इन्हें बहुत ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज मैंने भी ये गलती करी थी. स्टार्टिंग में मैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम सीखना चाहती थी. लाइक मैं रिवर्स करती थी, मैं पैलिंड्रोम निकालती थी, मैं ये वो बहुत कुछ करती थी, और मैंने कभी क्रिएशन और इंसर्शन डिलीशन पे इतना ध्यान ही नहीं दिया. लेकिन जब एक्चुअली मैं इंटरव्यूज़ में बैठने लगी तो मुझको पता चला जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती हैं. इनफैक्ट आज ही अमेजोन का एग्ज़ाम था हमारे कैंपस में, एंड वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एक लिंक लिस्ट को क्लोन करने का. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूज में. सो यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स so that you don't fumble there. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye. Happy coding.